So the second video of our series relating to the rapid revision of preliminary examination of Chhattisgarh Judicial Services. You can consider this as a rapid revision as well, and one which can be related to the MCQs part. ठीक है, तो कोर्ट फीस एक्ट का हम इसमें क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. The Court Fees Act 1870 was enforced on 11th March 1870, 1st November 1956, 1st April 1870 or 1st January 1870. It has been specifically given that it was enacted or it was enforced on 1st April 1870 while it was enacted on 11th March 1870. ठीक है, ये इसकी enforcement date रहेगी. Court Fees Act payable to the High Courts in their extraordinary jurisdiction is payable under which section? It is payable under section 4. तो ध्यान रखिएगा, कोर्ट फीस एक्ट जो है वो हाई कोर्ट में किन किन मैटर्स से रिलेटेड पेबल होती है. अपील से रिलेटेड यानी एपलेट जुरिस्डिक्शन, उनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो होता है उसमें, रिविजन की एप्लीकेशन अगर आप दे रहे हैं तो उसमें भी. ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन आपका सेक्शन 3 में दे रखा है, अपील, रिविजन, रिव्यू, ये सारे ज्यूरिस्डिक्शन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिस्डिक्शन दे आर गिवन अंडर सेक्शन 4. कोर्ट फीस इज पेबल ऑन डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड इन मुफिसिल कोर्ट्स और पब्लिक ऑफिसेस, बेसिकली हमारे जो सिविल कोर्ट्स होते हैं, सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 5 और सेक्शन 7. सेक्शन 6 provides for the court fees on the documents which are being filed in the municipal courts. In case of difference which is of general importance as to necessity or amount of fine, the decision is given by whom is final. So difference of opinion, ठीक है, और किससे रिलेटेड है? जनरल इंपॉर्टेंस का है. नेसेसिटी और अमाउंट ऑफ फाइन ये कौन डिसाइड करता है? टैक्सिंग ऑफिसर अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और क्लर्क ऑफ द कोर्ट. चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट डिपेंड्स ऑन डिसाइड्स द क्वेश्चन ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस. वहीं अगर सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन होता एज टू नेसेसिटी और अमाउंट ऑफ फाइन, not relating to any general importance, it's not a question of general importance, तब कौन डिसाइड करता? टैक्सिंग ऑफिसर who is appointed by the chief justice of the high court. The order or judgment of the taxing officer as to necessity or amount of fine is final under section 5. It has been held in which case? It was held in the case of Satappa Chetiyar versus Ramanathan Chetiyar. It's a decision of Honorable Supreme Court, so do remember this judgment. Computation of fees payable in money suits depends on amount claimed in the suit, amount of damages, amount of annuities or amount of compensation. So computation of fees, it has been provided that in money suits it has been provided under section 7. तो ये किस पे डिपेंड करेगा? The amount which is claimed as a relief in the suit. Second is, next question is, the court fees payable on the suits relating to movable property is to be decided according to what? Amount claimed in the suit, market value of the suit on the date of presenting the plaint, or transfer value of movable property. So it depends upon the market value of the property on the date of presentment of the plaint. Correct answer is option C. Refund of court fees on memorandum of appeal has been provided under section 12, section 13, section 15 और section 18. under section 13. तो रिफंड का मेमोरेंडम ऑफ अपील अगर फाइल हो रहा है तो उसमें जाके कोर्ट फीस है वो रिफंड हो सकता है, एज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 13. नॉट ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर कोर्ट फीस टू बी पेड. दिस इज ट्रू इन द लाइट ऑफ, यानी एग्जेम्पशन फ्रॉम कोर्ट फीस कौन से सेक्शन में दे रखा है? एग्जेम्पशन दे रखा है आपका सेक्शन 19 में. When too high court fees has been paid, refund can be claimed from the chief controlling revenue authority if the person produces probate or letters within how much time of the true ascertainment of the value of the property within 6 months. ठीक है, ये टाइम पीरियड याद रखिएगा. कितने टाइम में? 6 मंथ्स में आप उनको रिफंड अपना जो भी एक्स्ट्रा आपने पे किया है वो आप एप्लीकेशन किसको दोगे? चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी को. ठीक है. Court fees comprises of, now this talks about the structure of the act. So Court Fees Act, it comprises of 6 chapters, 36 sections and 3 schedules. It's been given under option C. So the correct answer is option C. Question 12. The rules as to cost of processes
अंडर सेक्शन 20 आर फॉर्मुलेटेड बाय। तो कॉस्ट ऑफ प्रोसेस इससे रिलेटिंग रूल्स कौन डिसाइड करता है? कंसर्न कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। इट्स द हाई कोर्ट विच डिसाइड्स और विच फॉर्मुलेट्स द रूल्स रिलेटिंग टू कॉस्ट्स ऑफ प्रोसेसेस. A table of process fees showing fees chargeable for service and execution shall be exposed in the conspicuous part of the house. In which language? So English language, vernacular language, English or vernacular language, or English and vernacular languages. So it's both English and vernacular languages. Chapter 5 of the act, it deals with what? See, this act is small. You need to keep in mind the chapter and the context which they are dealing with. So the heads. Chapter 5 deals with probates, letters of administration and certificates of administration, refund of court fees, process fees or mode of levying fees. It deals with mode of levying fees. Okay? Court fees shall be collected by stamps has been provided under chapter 5. Section कि वो स्टैम्प से कलेक्ट होंगे ये दे रखा है सेक्शन 25 में. अब वो स्टैम्प्स जो है वो इम्प्रेस्ड हो, अडहेसिव हो, इम्प्रेस्ड और अडहेसिव हो, या इम्प्रेस्ड एंड अडहेसिव हो. ये कौन सा है इसका सही आंसर? इसका द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज द कोर्ट फीस शैल बी कलेक्टेड बाय स्टैम्प्स विच आर इम्प्रेस्ड और अडहेसिव हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 26. Which section deals with cancellation of stamps? So section 30 deals with cancellation of stamps. Who is empowered to make rules regarding sale of stamps? कौन बना सकता है? हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, नोटरी पब्लिक या सिविल कोर्ट. So state government maintains or formulates the rules relating to the sale of stamps under section 34. So this was a short video relating to the Court Fees Act, the MCQs on Court Fees Act. Please do remember these MCQs for your upcoming examination. Please go through them and all the very best for your examination. Thank you.